So friends, we come on to the last set of discussion of this particular chapter is exercise. हैं? एक्सरसाइज? अरे सर आप तो बोले लेटर के अलावा कुछ आता नहीं। मैंने एक बात बोली थी कि इस वाले लेटर्स करस्पॉन्डेंस चैप्टर में से लेटर के अलावा कुछ पूछा नहीं जाता। लेकिन दोस्तों मैंने ऐसा बोला क्या ऑब्जेक्टिव नहीं पूछे जा सकते हैं? इसीलिए सभी स्टूडेंट्स को इस वाले चैप्टर्स के चैप्टर नंबर 6, 7 और 8 इन सभी चैप्टर्स का क्वेश्चन नंबर 1 ठीक से करना है। बाकी क्वेश्चंस आपको करने की ज़रूरत नहीं है। जो हम वीडियोस बनाने वाले हैं इसमें अलग एक बात ऐसी रहेगी जिसमें कि पूरा एक्सरसाइज जो है सभी चैप्टर्स का वो भी इन डिटेल डिस्कस किया जाएगा, राइट? ताकि आप सभी को एक्सरसाइज कंप्लीट करने में लिखने में आसानी हो। ईच एंड एवरी एक्सरसाइज एंड ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज विल आल्सो बी डिस्कस्ड, राइट? Because we are going to complete only question number 1, that is objectives of this chapters. Rest of the questions will not be discussed. आगे जो चैप्टर्स पे हमको पूरी एक्सरसाइज करनी है वहाँ पे हम जो है पूरा डिस्कशन करेंगे। आर द पॉइंट्स क्लियर? यस। चलिए शुरुआत करते हैं फिर आज क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, डायरेक्टर्स आर द रिप्रेजेंटेटिव्स। देखो इधर चलो, डायरेक्टर्स आर और द डायरेक्टर्स आर द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द shareholders, right? They are not the paid employees, they are not the creators. The dividend is to be paid within how many days from the date of declaration? Within 30 days of declaration. The registered shareholders receive dividend through dividend warrant. हमने लिखा है share issued free of cost to the shareholders are known as bonus shares. Share certificate should be ready to delivery by the company within dash months of the allotment, 2 months from the date of allotment, right? Secretarial correspondence with the members should be shortcut, lengthy or prompt or precise. It should be prompt and precise. Dividend is recommended by board of directors. Dividend is paid out of profits. Dash is issued by the company to its registered shareholders after declaration of the dividend at the annual general meeting of the company. Dividend warrant, right? After the declaration of dividend. Yes or no, right? Next is match the pair. First is dividend warrant. What is dividend warrant? Look at the points. कहाँ पे है देखो, instrument for payment of dividend. So this is A, right? Return on shares is dividend. So this is B. Bonus on shares. Bonus on shares. What is bonus on shares? कैपिटलाइजेशन ऑफ बिल्डिंग फंड नहीं, इंस्ट्रूमेंट ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट नहीं, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस नहीं, फिर कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व फंड है क्या? नहीं। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर है क्या? नहीं। इलेक्ट्रॉनिक्स कोऑपरेटिव सोसाइटी है क्या? नहीं। फिर नेशनल इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर है क्या? नहीं। इंटरेस्ट है क्या? नहीं। सो व्हाट इज bonus shares? Capitalization of reserve fund. These bonus shares have to be this bonus shares which the company is issuing can be issued out of the capital reserves they are having, right? कंपनीज के पास रिजर्व्स होते हैं, बैलेंस शीट में बनाए हुए रिजर्व्स, तो उसमें से एक टाइप का कैपिटल रिजर्व, उन कैपिटल रिजर्व्स में से जो है बोनस शेयर्स इशू किए जा सकते हैं। नेक्स्ट इज ईसीएस। व्हाट इज ईसीएस? इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस, राइट? इट इज डी। नेक्स्ट NEFT. What is NEFT? National Electronic Fund Transfer, right? National Electronic Fund Transfer. This is option number E, right? Is this point clear? This is A, this is C, this is E, this is B, and this is sorry, ये कौन सा था? ये D था क्या? सॉरी, इसलिए मैं बोला इसको ठीक से लिखते हैं। एक मिनट रुको, फिर से लिखते हैं अपन ठीक से इसको। ये क्या है? डी है, डी, और ये क्या है? ए, राइट? दिस इज कंप्लीशन ऑफ मैच द कॉलम। नेक्स्ट, राइट अ वर्ड और अ टर्म और अ फ्रेज which can substitute each of the following statement. Shares given free of cost are called as bonus shares. देखो मैं भी लिख रहा हूँ तुम्हारे साथ एक्सेस, तुम्हें भी लिखना पड़ेगा। इंस्ट्रूमेंट फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड वारंट, yes or no?
shareholders to whom the bonus shares is issued, shareholders to whom the bonus shares are issued, इसे हम क्या कहेंगे, existing shareholders, right? Next point, write one word or term or phrase which can substitute the each of the following, right? कहाँ तक थे हम? Shares given free of cost to the existing shareholders, bonus shares, instrument for payment of dividend, dividend warrant. Shareholders to whom the bonus shares are issued are existing shareholders. The authority which recommends the rate of dividend is board of directors. An officer who comes in contact with all the members of company through correspondence is secretary, company secretary. A special kind of check issued by the company on its banker to pay certain sum of money or dividend is ECS, right? Next, state whether the following statements are true or false. Bonus shares are issued to the existing shareholders, true. Building fund is used in issue of bonus shares, false. Bonus share means capitalization of reserve fund, true. Registered shareholder gets dividend through dividend coupons. Registered shareholders gets dividend through dividend coupon, true. Sorry, dividend warrant देते सबको, right? Dividend is the portion of the profits of the company which is allotted to the holders of the debentures of the company. This is false. Every company must issue or dispatch a share certificate to the allotee within 3 months after the date of allotment. 3 महीने के अंदर जो है share certificate issue होना चाहिए. This is also false because the time is 2 months. A complaint letter should not be replied promptly. This is also false, right? So this is true, false, 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 and false. Next is find the odd one out, right? Secrecy, dividend, and interest. This means secrecy is the odd one out. It is one of the points which has to be followed by a secretary. Yes or no? Right? Next, bonus letter, dividend letter, and board of directors. They both are correspondence. Board of directors is not a correspondence, right? Dividend warrant, interest warrant, and demat. They both are instruments for transfer. Demat is not. Secretary, board of directors, dividend, lucid language, right? Lucid language is a point which is not to be considered here. Complete the sentences. Dividend is recommended by board of directors. A company capitalizes its reserve fund for the issue of bonus shares. Payment of dividend must be made within 30 days of declaration. Dividend is approved by members in the annual general meeting. Approve कौन करता है? Members. Declare मेंशन कौन करता है, कितना देना है ये कौन बोलता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. अप्रूव कौन करता है? मेंबर्स इन द एनुअल जनरल मीटिंग. The dash has to communicate the decision of the management to the members by conducting the correspondence, right? Secretary. Next, select the correct option from the bracket. Return on shares is dividend. Capitalization of reserve fund, bonus shares. Correspondence, secretary. Payment of electronic ECS. Written communication, bonus shares, dividend, and ECS. Right? सॉरी, यहाँ पे आंसर्स दे, इसमें से चूज करने का, राइट? सो ये जो है रिटर्न कम्युनिकेशन, ये कहाँ आएगा? यहाँ पे आएगा, राइट? यहाँ क्या आएगा? रिटर्न कम्युनिकेशन, राइट? ये ECS बरोबर है, बोनस शेयर बरोबर है, और डिविडेंड भी बरोबर है, राइट? डन. आंसर इन वन सेंटेंस. व्हाट इज डिविडेंड वारंट? राइट? इट इज एन instrument for payment of dividend. What is capitalization of reserve? Capitalization of reserve is nothing but issue of bonus shares to the existing shareholders. What is dividend? The return paid to existing shareholders. Who recommends the rate of dividend? The board of directors recommend the board of directors recommend the rate of dividend.
Which type of shareholders enjoy the benefit of bonus shares? The existing shareholders enjoy the right of bonus shares. What is meant by the payment of dividend electronically? Payment of dividend electronic means electronic transfer of dividend to the members account. इसे short में one sentence में लिख सकते हैं. Correct the underlined words and rewrite the following sentence. Dividend is recommended by shareholders. No, board of directors. The person who purchased the shares of the company is called as depositor. No, he is called as the shareholder. He is called as the shareholder. Bonus shares are issued to free gift to preference shareholders. No, they are issued to the equity shareholders. Right? Payment of dividend must be made within 21 days. It is 30 days of declaration of dividend. The company must issue a share certificate within 3 months of allotment of shares. No, it is 2 months. Right? Arrange in proper order. Allotment of shares, application of shares, शेयर सर्टिफिकेट. सबसे पहले आते हैं एप्लीकेशन, फिर होता है उसका अलॉटमेंट और फिर उन्हें दिए जाते हैं शेयर सर्टिफिकेट. मेंबर, एप्लीकेंट एंड बोनस शेयर्स. राइट. सबसे पहले एप्लीकेंट, देन ही बिकम्स अ मेंबर. आफ्टर बिकमिंग अ मेंबर ही गेट्स द बोनस शेयर्स. राइट. क्वेश्चन नंबर 2 ऑनवर्ड जो है ये एक्सरसाइज आप लोग को कंप्लीट करने की गरज नहीं है. राइट. ये अभी जो जितना क्वेश्चन नंबर 1 है इसकी सिर्फ आंसर जो है एक्सरसाइज बुक में आपको लिखना है. प्लीज प्रिपेयर अ डिफरेंट एक्सरसाइज बुक फॉर एसपी. उसके अंदर ही आपको लेटर्स लिखने हैं. जिसमें लेटर्स चालू किए उसमें लेटर्स भी लिखने हैं. उसके बाद ये एक्सरसाइज लिखने हैं जिसमें आपको ये सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स लिखने हैं. I hope the exercise is very much clear and easy to understand and write after watching the videos. Thank you so much. Please watch the videos and complete the exercise on time. असाइनमेंट की डेडलाइन मैं आपके ऐप पे डाल दूँगा. Thank you so much.